Thank you very much for joining today in the HIBA's program, Let's HIBA Talk webinar program. This is the webinar series in 2025. Today is the second program, Alhamdulillah, and we have invited PEMRA's Punjab Director General, Punjab Operations, Mr. Mohammad Ikram Barkat, and we have two panelists, Dr. Aziza Anjum and Saeed Maqbool Hassan from Bahria University. So I welcome all the guests. So soon will be more be joining. Inshallah, we'll get introduced later with everybody. So let's start. I would welcome Dr. Aziza to put the question to Mr. Ikram Barkat. Thank you very much. I am very pleased कि आपने मुझे मौका दिया है और एक अहम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर पर्सन से हम 1-to-1 टॉक करेंगे. कम्युनिकेशन इज़ वेरी मस्ट इन सोसाइटी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. और आज जो है जब भी कोई बात होती है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ सोशल मीडिया से भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब भी कोई चीज़ आती है जिस पे लोगों को थोड़ा फील होता है कुछ, तो वो फ़ौरन सवाल होता है कि पैमरा कहाँ है. तो सबसे पहला सवाल मेरा इकराम साहब से गुजारिश है कि पहला सवाल ये है कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैमरा इन रेगुलेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान एंड हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू इट्स मिशन. जी इकराम साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी शिरकत का. आप पैमरा के अगराज़ व मकासिद पे रोशनी डालिए. जी. Thank you very much, Dr. Saiba, and thank you very much, HIBA, for providing this opportunity and to speak to this August forum. I'll take few minutes to explain the background, and then I'll come to the question. There is an Article 19 in the Constitution of Pakistan which specifies that every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of press, subject to any reasonable restrictions imposed by law. So it further it provides the outer line of the restrictions which can be imposed. Multiple forms of media exists in this era in the country, starting from print media, then electronic media, then social and digital media. The concept of citizen journalism have evolved from the social media as well, and now we are entering in the or we have already entered in the era of artificial intelligence as well. So Pakistan Electronic Media Regulatory Authority deals with the form of electronic media only. It was established through an ordinance in 2002, and I am working with this authority since its establishment, since 2002. And we all know that at the time of independence, we only had Pakistan Broadcasting Corporation, Radio Pakistan, and in 1964, Pakistan Television was introduced, and since 1964 till 2002, the broadcast media remained under state control. In 2002, PEMRA was established in order to regulate electronic media in the country, and in order to open up private media for the private sector. The mandate given to it was to improve the standard of information, education, and entertainment, and to enlarge the choice available of people of Pakistan in the fields, in the various genres of media, and certainly to ensure accountability, transparency, and good governance by optimizing free flow of information. So under this law, the state-run media was exempted, and PEMRA started its operations in 2002. And under the law, various rules and regulations were framed. PEMRA divided electronic media into two broader categories. One is broadcast media, in which we consider satellite TV channels, FM radio stations, and the other is distribution services like cable TV networks, direct-to-home operators, internet protocol televisions, mobile TV, audio, video operations. So PEMRA formulated a comprehensive regulatory framework for licensing of each and every category falling under these two broader categories. We have framed rules, then for each separate category, we have regulations. And then a code of conduct was
Initially, it was embedded in the law, but consensus was not being made on that code of conduct. And in 2013, Supreme Court of Pakistan formulated a media commission. And that media commission, after wide consultation with all the stakeholders, proposed a code of conduct, and that was then enacted, and now that is applicable on all media channels in the country, and that was a consensus document. And the apex court of the country has also number of times stated and ordained in their judgments that this code of conduct is in line with the Article 19 of the Constitution, and it ensures free media in the country. So under these rules and regulations, PEMRA specified certain criteria for issuance of each category of licenses separately, and then there were certain provisions for evaluation of these applications. And initially, PEMRA started licensing for satellite TV channels. The license were granted for 10 years. For FM radio stations, licenses were granted for 15 years. And for cable TV and other distribution services, licenses were granted for 5 years, and those were renewable as well. The law was further amended in 2007, and that was, I would say, a big blow, because cross-media ownership restrictions were removed in 2007. Previously, a media house operating a print media was not allowed to get a news channel license. After removal of these cross-media ownership restrictions, we have witnessed number of media houses owning print media or papers. They entered into news media in the country. So now presently we have 142 channels operating in the country, with 37 news and current affairs channels, and 55 entertainment channels, and 25 regional language channels in various regional languages like Pashto, Sindhi, Punjabi, and other languages. And then we have educational channels as well. We have specialized subject channels as well. And there are 235 FM radio stations operating in the country right now. 175 are commercial FM radio stations, and 60 are non-commercial. Non-commercial FM radio stations were licenses were granted to the educational institutions, to government entities for the public service and for education of the students, education and training of the students. In the same way, 3,700 cable TV networks are operating, 30 IPTV networks are operating in the country. So this was a brief about PEMRA up till now. And one more thing which I would like to add, that after introduction of PEMRA and once the media was opened up to the private sector, education in the field of media and communication studies has also flourished, and number of universities are now offering degrees in media and communication studies. So this was a little brief about the role of PEMRA. I will stop myself here if you have any other question. थैंक यू इकराम साहब, एक बात ये पूछनी है कि आप ओनली पेमरा रेगुलेट्स और इट गिव्स सम लाइंस ऑन स्पेशल रिगार्ड्स? न्यूज़ चैनल्स भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है, जैसे आपने बताया, एजुकेशन चैनल भी हैं, रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं. तो पेमरा ओनली रेगुलेट्स और ऑर्डर्स एंड गाइडलाइन give some guideline. Yes. Thank you very much for the question. PEMRA, as I mentioned, that in 2013, a media commission was formed, and they have developed a code of conduct for all categories of media, including news and current affairs and entertainment channels. And that provides a broader guidelines about their content, that what type of languages they will be using, what about protection of children's, privacy of personal data, religious tolerance and harmony, what about reenactment shows, and then there is also a self-regulatory mechanism provided in the law for the media houses, and that is that they have to form their own editorial committees, monitoring committees to filter the content before airing. Then
there is another mechanism provided in the law that they will be having a time delay mechanism. They will not broadcast live. They will be having time delay mechanism to just to monitor the content, that anything against or violative of this code of conduct should not be aired. So the code of conduct enacted is a document which provides broader guidelines for all these genres, including news and current affairs, including entertainment, and including regional language channels. थैंक यू जी. हमारे दूसरे पैनलिस्ट, मैं सवाल करूं या मकबूल साहब? Just I welcome Dr. Tariq Saeed from HIBA Dubai, consultant Dubai, and welcome. He is the host of the program. Thank you very much, Dr. Tariq Saeed. We already started the program. Thank you for joining. So our panelists are here. Dr. Aziza Anjum and Dr. Maqbool Hassan. So we got the introduction from our special guest, Mohammad Ikram Barkat from PEMRA, Punjab Operations. So we already started now. I request Dr. Maqbool Hassan to go and proceed for the second question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank to Hashmi Saab that he provided me an opportunity to be here and to be with the senior official of the PEMRA. That is a very important institution of government of Pakistan, and its role is very crucial and important. Sir, I would like to ask a question to Sir Barkat, that how do you ensure compliance with PEMRA's codes of conduct and regulations by television and radio channels, particularly if there is any violation, you notice any violation? Thank you very much, Dr. Saab, for the question. I'll take few moments to explain this. We have 3-4 mechanisms to implement this code of conduct. One is we have a monitoring setup established which operates 24/7 and it has the capacity to monitor and record transmission of 250 channels. That is linked with tailor-made software, state-of-the-art software. It can transcribe the content of any channel as well, and it have the storage capacity of up to 6 months, and later we archive the important contents as well. So one mechanism is our monitoring setup, which is monitoring them 24/7, recording them 24/7, and whenever they see any violation of the code of conduct, they report it. We have a separate section, one of which I am heading also, that is operations. They report it to the operations section, and operations section evaluate the content in light of the code of conduct, and if some content violative of the code of conduct is found, that is sent to a council of complaints. We have a council of complaints under the law. Section 26 of PEMRA ordinance provides that there shall be a council of complaints. That council of complaints comprises of a chairperson and 5 members, and those are not PEMRA employees. Those are appointed by the federal government, and those are from the field of media, from academia, legislature, judiciary, and these are people. Those are independent people, and that complaint is placed before that council, and that council evaluates the content, and then they decide whether the content is in line with the code of conduct or violative of the code of conduct. If the content is found violative of the code of conduct, then we have certain punitive actions. They can, if it is a minor mistake, they can ask them to relay corrigendum. If that is of some swear nature, they can censure them or fine them. In the swear cases, they can prohibit a program, or they can suspend license of certain channel. So there are number of mechanisms for that. One. Second is our complaint mechanism. People also, certainly, freedom of expression and freedom of speech is a subjective matter as well, specifically when we talk about decency and morality.
So it may differ from person to person. Whenever a person feels that the content in his opinion is not as per law, they can file a complaint to PEMRA, and we have 5 different mechanisms to receive complaints. One is, I have explained, Council of Complaints. Then we have a 24/7 complaints call center. Their toll-free number is 0800-73672. Anyone can call on that number, and that is a free of cost call, and they can record their complaint. Then we have an email address, complaints@pemra.gov.pk. Then thirdly, they can visit our website www.pemra.gov.pk. Then we are also present at various social media platforms with the tag of @report PEMRA. And then lastly, certainly in the country, we have a Prime Minister's complaint portal as well. Anyone aggrieved of the content can file a complaint, and PEMRA is going to take cognizance of that complaint. And the procedure is that they summon both the complainant as well as the respondent channel, and they evaluate the content and they decide on that. Sir. Hope I answered the question, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. I just there was a question which you have already answered about the complaints. Now, the next question is, sir, how do you stay updated with the latest developments in the field of electronic media, and what is the mechanism to implement these types of new developments within the electronic media? Thank you very much, sir. There is some distortion. I think someone's mic is open and they are into some conversation. If you can ask them to put their mics off so distortion can be avoided. Yeah, thank you, sir. Just pointing out again, reminding, kindly keep your mic and camera closed. Somebody joined, I removed already. Thank you very much, sir. This recording is going on, so please don't disturb. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. And thank you for the question, Dr. Saab. There are different, we use different tools to get in touch with the latest trends. One is through various researches. We have our own research and policy section with the mandate to conduct researches on latest trends and the latest things going on in the field of media. Secondly, we collaborate with the educational institutions as well, and we signed various MOUs with the various universities as well, and we share topics of research with them which we are needing. And then we hire third parties also for the research as well, and we are members of various unions, international unions as well, and we get in touch with them. There are regular interactions with those unions, with the universities, and with the market players. And certainly the input also comes from Pakistan Broadcasters Association as well, and the Cable Operators Association as well operating in the country. We have regular meetings with them. Whenever we prepare a regulatory framework or regulations or some kind of policy paper to regulate them, we try to get their feedback on that. We float it as a consultation paper, and we try to get their feedback so that their input can be incorporated in those. So through research, we get ourselves in touch through the academia, educational institutions, and then certainly after getting that information of those, we also had capacity building programs as well, and we keep on training our staff as well. And one other thing is that we have also started training sessions with the media houses. Up till now, we have conducted 70 sessions with the various channels in their bureau offices, and around 1360 media persons were trained about these laws. Sir. Thank you very much, Mr. Ikram. May I request Dr. Aziza to ask the next question, please? Yeah, thank you, Dr. Tariq Saeed. He is the host, so he'll going to take care. Thank you very much, Dr. Tariq Saeed.
Yes, very thank you. इकराम साहब ने बहुत अच्छी तरह बहुत सारी चीज़ें बताई. I have attended a lot of radio programs and different TV program myself. रेडियो इज सम बेटर और उससे कंप्लेंट्स कम आती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुतालिक आवाम जो है वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी होती हैं. तो इन कंप्लेंट्स को आप किस तरह सेटिस्फाई करते हैं और आप तक किस तरह ये कंप्लेंट्स क्या पहुंच जाती हैं एज सच? मतलब कुछ लोग अखबार में आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ लोग पोस्ट डालते हैं, कुछ लोग जाहिर है आपको ईमेल वगैरह भी करते हैं. तो Thank you very much, madam, for the question. Some of the part of the question I have already answered about how we take complaints and how we handle those complaints. Just to give some data, in last year, we have received 66 complaints about content. Now, the complaints about content are, and mostly you are very right that on about radio there are very few complaints, and if there are complaints, those are from remote areas like Jhang, like Rajanpur, like Muzaffargarh, South Punjab areas, and interior Sindh areas. And then certainly there, one more thing I would like to say, that complaining trend is not much there in the remote areas as well. The people of remote areas not complaining much about the content. Either they don't know how to complain, or even I myself has conducted few surveys about this, just to know that why people complain and why they don't complain, and either they agree about some content or not. So people have their opinions about the content. They, whenever you will ask about them, they have their opinions, but they do not complain. The number shows that as well, that only 66 complaints were filed formally to PEMRA about certain contents. How we take on complaints and how we handle complaints, that I have already mentioned in a question, that we have number of formats to receive complaints through Council of Complaints, call center, toll-free number, website, email, and there is a Council of Complaint which deals with those complaints. But certainly, every person has his own perception about any content. They can feel like what they want to, but yes, certainly PEMRA also monitors the social media as well. PEMRA also monitors the columns and newspapers and people talking about certain content. We take cognizance of that also. And in this way, the mechanism works. Thank you. Assalamualaikum. Ji, Barkat Saab, I would like to ask one thing, having the opportunity to be here with you, that is there anything in your priorities, in the priorities of the PEMRA, to promote the Islamic image of Pakistan, as Pakistan is a basically Islamic democratic country, and particularly it is the country is set and established on the basis of Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah. So is there anything in your priorities, in the priorities of the PEMRA, to promote such type of? Yes. That is already there in the laws as well as in the code of conduct, that religious content is certainly being aired as well. But what we say is, or what code of conduct says is, that hate speech and any radical comments against any sect or any religion, these kind of comments cannot be certainly broadcasted. But said they can, and there are number of channels operating in the country which are, showing religious content. However, up till now, licensing policy to grant licenses specifically to the religious channels, you must understand that there are different sects are also operating in the country.
and every sect want their separate channel, and then they may say what they want to say. The matter of licensing of religious channels was referred a number of years back to the Islamic Council, जिसको हम इस्लामिक नजरियाती काउंसिल भी कहते हैं. Islamic Council of Islamic Ideology. Yes, Council of Islamic Ideology, and up till now they haven't suggested on that, and it's been number of years. However, even having said that, channels are allowed to relay. You must have seen that specifically in the Ramzan, they have number of transmissions, number of channels are also. But what we object is, or what the law prohibit is, the hate speech or incitement or anything which can harm the interests of other religion or sect. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Now I would like to ask some further question that is particularly about the challenges. So, what are the biggest challenges you are being faced? The PEMRA is being faced while regulating. अस्सलाम वालेकुम. मेरा हाथ तो उठे उठे अब थक चुका है, मैं नीचे कर रही. Thank you very much. I just want to remind you again that we have two panelists for this interview, and Dr. Aziza Anjum and Dr. Maqbool Hassan, and the other questions will be taken up after the session. Thank you very much for just holding. I noted your hand was raised for a long time. Dr. Abda, please kindly hold till the end of the session. We'll allow, if time allows, we can give you a chance to put any question. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you, Raksab. Few years back, we were thinking that convergence of technologies is the big challenge, because now content is available on contemporary media as well as electronic media as well as digital media, and when we were analyzing the content of the mainstream media was different, and the content aired by the same media house on their digital platform was different, and whatever they feel that content can be taken cognizance of, they relayed that content on their social media or digital platforms, and they avoided to relay that on contemporary media or TV channels. Nowadays, we are facing, and I think the whole world is facing, the challenge of misinformation and disinformation, AI generated content and deep fake content. And then certainly we are also facing the manipulation of content which people relay. सिर्फ बताने के लिए एक रेफरेंस, कल आप सब ने सुना होगा, खबर ब्रेक हुई, कनाडा के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया. तो I saw a tweet from a renowned journalist saying that वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया. He didn't mention that कनाडा के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया. He just mentioned that वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया, and he pulled through number of views and number of likes and number of shares. I don't want to go into some political discussion, but I hope you are getting my point. And later, once he or she got some likes or posts or reposts, he or she corrected their tweet by saying that Canada ke Wazir Azam ne istifa de diya. So now this is a technique of getting views and likes and dislikes. In the previous days, we have also seen such kind of activity from various people who are in the. So the big threat or big challenge we are facing is of misinformation and disinformation coming from all spheres. I'm not talking about any side. It may come from politicians, it may come from bureaucrats, it may come from legislature, it may come from judiciary, it may come from journalists. UNESCO recently has reported that 62% of social media influencers do not verify their content before posting it. So this is becoming a big challenge for us, I think. Sir. Thank you. Actually, we were planning to hold one special session with our guest. He's a DIG in Punjab Police.
Mr. Athar, about the cyber security. So this is a question is very much related. So are there any naturally government is trying their best to for implement some laws for the to control the cyber security issues. So thank you very much. We'll continue on this special topic separately. Yeah, the questions we have already listed. Can you go ahead, please, the panelists? यस, वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छा इकराम साहब आपने ये बात बताई कि जो रिलीजियस कंटेंट होता है या दूसरे कंटेंट होते हैं उनको भी आप चेक करते हैं। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि जो चॉइस ऑफ फ्रीडम है और एक्सप्रेशन है और आपका जो कंट्रोलिंग बॉडी है, इन दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? Certainly, madam, we go with the scheme of law. I would say that now in this era, especially, I personally feel after having this 22 years of experience in the regulatory body and dealing with the media, that now the definition of freedom or definition of human rights, one feels that my right is a right and others' right is not a right. Unfortunately, this has emerged in the society, and people think that whatever I want to say, I will say. This is not the forum. I can show you number of clips where people are, abusing or threatening or using hate speech or leveling allegations and so on and so forth. So certainly we being as a regulator, try to stick to the regulatory framework or the wisdom of the legislature provided by them through the ordinance and then framed under the rules and then regulations and then the code of conduct duly recognized by the media houses as well as the legislature as well as the executive as well as the judicial part of governance. So we certainly we cannot provide much details of every aspect. Mean to say, law says about decency. I'm talking about decency and morality. The law says that anything which is against the commonly accepted principles of decency cannot be aired. Now, commonly accepted principles of decency may be different from person to person, or may be different from culture to culture, or may be different from language to language, or may be different from society to society. So in Pakistan, where number of communities exists, number of regional segments exists, sometimes it becomes very difficult to balance between them. However, this is a challenge which we are trying to do. Maybe sometime we remain successful and sometime it is much debated in the society. Thank you. The one more question from my side. Can you walk me through your experience and regulatory frameworks and laws related to electronic media? How do you apply the expertise at PEMRA? As far as my experience is concerned, I joined this organization in 2002 and worked on various positions as well. And I have witnessed all the developments, downfalls, uprises, and all the things which have been happening in the country about media regulations as well, the role of various stakeholders as well. I would say the one thing which I want to say here was that the removal of cross media ownership restrictions. Before removal of cross media ownership restrictions, we had 2 news channels in the country, and now we have 37 news channels in the country, and most of media houses are running newspapers as well as they are in the business of electronic media. They are on digital media, and now they are using all the platforms. They
I would say they try to run one media from the other media as well, and they manipulate these platforms as well. Presently in the country, we are not having effective regulatory framework for the digital media, on which government is working, legislature is working, stakeholders are certainly involved in there, and they are providing their inputs, and we are hoping that in future we will be having a regulatory framework for the social media as well. But else there are numbers of issues in that which are being discussed. I have seen role of one more thing which I would like to add. I mentioned that we have 55 entertainment channels in the country, and we have 37 news channels in the country. The most of our discussion, the most of time, we discuss the content of news and current affairs media. We just put aside the content of entertainment media, which is you know giving its impact to the on the society, social fabric of the country. They are their content is influencing our wearing trends, our language, our behaviors, our daily life routines, and neither people bother to say anything about that content. We receive very few complaints about those contents. And one more thing, if you this is my personal experience, that how as agenda or something is being set on the society, that if you see sponsors of a program after end of certain drama series, when it ends, you see the names of the sponsors. You will find certain names of certain NGOs which are sponsoring the content of that entertainment channels. And when you collaborate, when you see, you analyze that what that NGO is doing and what was the content aired on that drama which they sponsored, you will come to know that how they are influencing on the daily lives of the people. So and this experience is going on and going on, and I have experienced a lot, and we are experiencing day by day new things, because trends are changing, technology is changing, people's thinking is also influenced by the media. So we try to contribute in that way, that when we interact, like I am interacting on this session, we interact with the people on various forums, they take their input, and we try to incorporate that input in the regulatory framework so that we can synchronize the regulatory framework with the thinking of the people. Certainly, each and every comment, each and every thought cannot be converted into regulatory, cannot be adopted in the regulatory framework, but broadly, we try to do this. एक एडिशनल सवाल है कि फेसबुक और यूट्यूब को पेमरा कंट्रोल करता है या कोई और रेगुलेटरी बॉडी है? मैडम, अभी तक कंट्रोल तो कोई भी नहीं कर रहा। मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है। हाउएवर, जैसे सर ने बताया, साइबर क्राइम्स लॉ अवेलेबल हैं, साइबर सिक्योरिटी लॉज अवेलेबल हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स लॉ अवेलेबल है, जिसके तहत कुछ रोल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो साइबर क्राइम विंग है वो देखता है, और कुछ रोल जो है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी देखती है। But certainly that is about the content, that is not about the platforms. There is a difference, that whether you want to regulate the platform or you want to regulate the content. Unless we regulate both, the model is not going to succeed. I see number of professors, doctors are there, and in communication, they say that there is an agenda setting theory. Previously, in the newspaper, in the electronic media, the agenda setting works vertically, from down to up. A reporter files a report, then it was scrutinized by some sub-editor, then it was further scrutinized by the editor, and then they select that what content is going to be published or not. In the same way, in the electronic media,
the system works from downward to upward. A reporter files a news story, their director news is going to evaluate them, their monitoring committee is going to see whether it can be aired or not, and then they will decide that whether it will be aired or not, and what content will be aired and what content will not be aired. In social media, the agenda setting has moved from vertical to horizontal. Every person can place his agenda point on the social media platform, and then there are algorithms working, then there are likes, there are tweets, there are retweets, there are forwards, and a number of techniques they are using for that. So pertinent question, regulatory framework comprehensively is not available. They are trying to regulate their content, and that is certainly through two bodies. One is Federal Investigation Agency and one is PTA. जी बहुत शुक्रिया इकराम साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो दीगर जो एजेंसीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो इदारे हैं, पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है और इस तरह के जो दीगर इदारे हैं, उनसे आपका जो कोलैबोरेशन है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी बॉडी, वो क्या है और वो किस तरह से, उसका क्या मैकेनिज्म है? Sir, thank you very much for the question. The composition of our authority, which we say authority, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority. Authority means a governing board, a policy board. And that body comprises of 12 members and a chairman. It is a huge board. And that 12 members includes Secretary, Ministry. There are 4 ex officio members. One is Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, ex officio member of the policy board, deciding board. And then on number 2 is Chairman Pakistan Telecommunication Authority. Chairman PTA is a board member. Whosoever will be the chairman will be the board member of PEMRA, authority member of PEMRA, and will be participating in the decision making process. Then thirdly, Secretary Ministry of Interior is also member of that board. And then Chairman Federal Board of Revenue is also member of the board. So these are 4 ex officio members, and they provide their input in all the policy making and decision making of the authority. And then there is a full-time chairman, and then certainly to involve stakeholders also. 2 members, one is from Pakistan Federal Union of Journalists and one member from the broadcasters, to be nominated by the Pakistan Broadcasters Association. They also attend the meetings of the board, and they provide their input in all the policy making and decision making of the authority. So right from grant to license till suspension of license, taking any punitive action or any type of policy making or framing rules or regulations or directives, they all are involved. So it is we don't have to engage them separately. The agenda is placed for this authority, and they can give their input in the board as well. Sir. जी सर, वो माशाल्लाह बहुत आपने अच्छे अंदाज से इसको आंसर किया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन अगला मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेमरा की जो सक्सेस है, जो पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेगुलेटरी रोल, उसके लिए कोई अपने बेंचमार्क्स वगैरह सेट किए हुए हैं क्या? वो अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करते हैं आप, या कैसे उसको आप गैज करते हैं? Sir, thank you very much for the question. Certainly, the broader role of PEMRA or mandate of PEMRA is provided in the law, which says कि हमने लोगों को choice available करनी है in the number of genres, जिसमें news है, current affairs है, religious knowledge भी है, culture, science, technology, entertainment, sports, drama, etc. और free और information का flow भी हमने ensure करना है। और ये तो अगर मैं थोड़ा सा 2-3 सेक्टर्स में इसको देख सकूं, तो 2002 में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं था। आज 140 के करीब प्राइवेट चैनल हैं और 30 के करीब जो है वो फॉरेन टीवी चैनल्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। सो इट प्रोवाइडेड number 1 choice is available. In 2002-03 we have the issue that Pakistani people didn't have any choice, and they were only constrained to see the national broadcast content of the national broadcaster. Now they have a choice. If they don't like content of one channel, they pick up the remote control and they change the channel. They can see sports, they can watch entertainment, dramas, they have the opportunity, they have the option to see news and current affairs content. So one objective was
to make the choice available to the people of Pakistan, so choice is available. Secondly, the mandate was to provide information, education, and entertainment. That is also being provided through these channels. And then third one was to ensure accountability, transparency, and good governance. This is a debatable point, and it has ensured or it has deteriorated. Once we see the various indices on which we are falling at the point, the situation is not, I would not say that it is very good situation. In 2022, we were at 157th number in the World Press Freedom Index, and now we are at 152nd number. In 2020-21, we were at 145th number. So we are moving from 140th to 157th number, up and down. And in the same way, in the region, other countries like India, like Bangladesh, like Afghanistan, they are also, however, I would say that Pakistan in this year, in 2024, Pakistan is at 152nd number out of 180 countries in the press media index, and India is at 159th number, Bangladesh is at 165th number, Afghanistan is 178 number. So in the region, we are performing well. However, there is a lot of margin for improvement is available. And moreover, we also publish annual report on our progress that is available on our website. Yearly annual report can be accessed at our website www.pemra.gov.pk, and PEMRA is under law bound to present its performance report to the President of Pakistan. So that is also being submitted. And lastly, the public can judge better that whether PEMRA has performed its role or not. Certainly, there is a criticism as well on the performance of the regulatory body. Sir. Thank you, sir. May I request Dr. Aziza to ask next question? Yes, very thoughtful talk. और बहुत ही हैरत की बात है कि लोगों को ये लगता है कि शायद पैमरा जो है वो इज़ डूइंग नथिंग और डूइंग नॉट गुड, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ चीज़ें जो मैं आई प्रैक्टिस इन अ सबब एरिया, और ज़ाहिर है जो लाइफ स्टाइल है हमारे लोगों का, तो मैं आपके ज़रिए से ये बात कहना चाह रही हूँ. दो चीज़ें जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नज़र आ रही हैं, एक लाइफ स्टाइल जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा रिच दिखा रहे, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली में भी 2 औरतें खाना पका रही हैं ना, कुक. दूसरी चीज़ ये कि नेगेटिव रोल्स आर वेरी इंक्रीजिंग इन आवर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स. इस हवाले से थोड़ी मैं आपकी तवज्जो भी चाहूँगी और इस पर मैं चाहूँगी कि आप कोई बात करें. थैंक यू वेरी मच मैडम. ये मेरा अपना भी एरिया ऑफ कंसर्न है, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट. मैंने भी इस पे बात की कि हमारा सारा फोकस जो है वो जब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, मैं बहुत सारे फोरम्स पे जाता हूँ और सारी की सारी डिस्कशन 140 चैनल में से 37 के ऊपर हो जाती है, जो कि न्यूज़ चैनल हैं, उसके कंटेंट पे चली जाती है. और ये जो एंटरटेनमेंट का कंटेंट है, जिसमें आपने बताया कि लाइफस्टाइल बहुत इस तरह का दिखाया जा रहा है और नेगेटिव रोल्स, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में भी जाऊंगा. जब पैमरा आया और पैमरा ने लाइसेंसिंग शुरू की चैनल्स की, तो उससे पहले यहाँ पे इंडियन चैनल्स बहुत चलते थे, जिस तरह स्टार प्लस है और इस तरह के जो चैनल्स थे. तो हमारा जो व्यूअर था, जो हमारे ख़ास तौर पे जो ड्रामा के व्यूअर्स थे, जिसमें फीमेल की तादाद सर्टनली एक बहुत ज़्यादा है, तो वो दे वर इंस्पायर्ड बाय दैट कंटेंट, और हमारे चैनल्स ने भी शायद वो लाइन लेनी शुरू कर दी और उस तरफ जाके उन्होंने कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया. और आजकल जो आपकी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं डिफरेंट, जिसमें टिकटॉक है, जिसमें स्नैपचैट है और इंस्टाग्राम है और इस तरह की, जिनके ऊपर वेरियस किस्म की रील्स और चीज़ें लोग शेयर कर रहे होते हैं जो कि रियल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. दैट इज़ ऑल्सो अ फेक न्यूज़, दैट इज़ ऑल्सो अ फेक कंटेंट. कि मैं जो है वो लोगों को दिखा ये रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही एलीट क्लास से बिलोंग करता हूँ, और जब क्योंकि मैं मेरे साथ बहुत सारे लोग राब्ते में होते हैं, तो आई नो देम पर्सनली, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन उन बेचारों की पर्सनल लाइफ होती बड़ी मिजरेबल है.
लेकिन वो दिखा ये रहे होते हैं कि हम तो शायद एलीट क्लास से बिलोंग करते, तो उससे ये भी एक फेक न्यूज। और ये हमारे यहाँ माशाल्लाह 60% यंग लोग हैं और दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ कंटेंट। और अभी आज ही मैं डाटा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपको थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ये खोल लूँ। एक मैं आज ही देख रहा था, स्टैटिस्टा ने एक डाटा जारी किया और उन्होंने कहा कि इट इज हार्डेस्ट टू टेल ट्रूथ फ्रॉम फेक डाटा ऑन टिकटॉक एंड ऑन एक्स मोस्टली, एंड देन फेसबुक तीसरे नंबर पे है। यानी ये लोग जो शेयर कर देते हैं उनको अगर आप बताएं कि ये सही नहीं है तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत रिएक्ट करते हैं। और इसी तरह उन्होंने, जैसे फेसबुक का आपने नाम लिया, तो लोग इसके ऊपर ट्रोलिंग और ये जो हेट स्पीच जिसे हम कहते हैं वो सबसे ज़्यादा इन 2-3 ऐप्स पे हो रही होती है। तो कंटेंट हमारा भी एक आम तौर पे एक बात मैडम ये की जाती थी कि मीडिया वो दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, मीडिया वो नहीं दिखाता जो लोग देखना चाहते हैं, मीडिया लोगों को किसी कंटेंट पे लगाता है। ये हम जो इकोनॉमिकली ड्रिवन सोसाइटी में रह रहे हैं, जो कि ह्यूजली इम्पेक्टेड बाय द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, तो वो एक एड, एक प्रोडक्ट का एड और कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और वो मीडिया पे आती है और लोग उससे इन्फ्लुएंस होके वो स्टाइल अपना लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा लैंग्वेज, हमारा वेयरिंग स्टाइल्स इन्फ्लुएंस हो गए हैं इन चीज़ों से। तो मैं खुद, मेरा ये अपना कंसर्न है और इसमें नेगेटिव रोल्स के ऊपर भी बिल्कुल दिखाए जाते हैं कैरेक्टर्स। यहाँ पे हम अगेन वही बात है कि फिर हम उसमें चले जाएंगे सब्जेक्टिव डिस्कशन में कि मेरे लिए हो सकता है कोई चीज़ किसी और तरह हो और उसी कंटेंट को आप या कोई और किसी और तरह देखे, तो देन देयर शुड बी सम पर्सन कंप्लेनिंग अबाउट दैट। हर चीज़ के ऊपर सो मोटो एक्शन या खुद से लेना, वो शायद रेगुलेटरी ओवर, जिसे हम कहेंगे कि ये एक ओवर एनफोर्सिंग चीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा हम भी देखते हैं कि अगर कोई शख्स कंप्लेंट लेके आ रहा है तो उसकी कंप्लेंट को हम जरूर हैंडल करते हैं। अगर मैं आपको बता सकूं तो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वर प्रोहिबिटेड, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स वर प्रोहिबिटेड, आई हैव द क्लिप्स एज वेल, जो लोगों ने शिकायत की। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक ड्रामा चलना शुरू हुआ एक टीवी चैनल पे, तो वो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर आता है कि ये किसी की लाइफ से इसका अगर होना मुमासलत जो है वो इत्तफाकिया होगी। लेकिन वो जो ड्रामा था वो किसी खातून की रियल स्टोरी पर शायद मबनी था और हमें तो नहीं पता था कि रियल स्टोरी है, वो डिस्क्लेमर है ड्रामा। उस खातून ने कंप्लेंट की फिर पेमरा को कि जी ये जो कंटेंट चल रहा है ये मेरी कंसेंट के बगैर चल रहा है और ये तो मेरी स्टोरी है, एंड देन दैट ड्रामा वाज बैंड on that channel. So someone has to come forward and say, जैसे अभी आपने कहा इसके ऊपर एक फादर आए थे हमारे पास इसी तरह एक लेके कि इसमें फादर का रोल बड़ा नेगेटिव है, एंड देन दैट कंटेंट वाज अमेंडेड ऑन देयर कंप्लेंट। वो चैनल्स के साथ टेकअप किया गया मामला, उन्हें बताया गया कि लोगों का कंसर्न है इसमें फादर का रोल बड़ा नेगेटिव है तो आप इसको देखिए, तो उन्होंने उसको फिर थोड़ा सा अमेंड। तो व्हेन एवर समवन कम्स टू अस एंड से एनीथिंग अबाउट अ कंटेंट और कंप्लेंट्स, we try to take action on that, we try to get it modified or whatever action under the law is available. So ये बिल्कुल कंसर्न है। इसमें खाली रेगुलेटर का रोल नहीं, इसमें अकेडमिया, इसमें पब्लिक का रोल भी है, व्यूअर्स का रोल भी है कि वो भी दे शुड कम फॉरवर्ड एंड अपना कंसर्न जो है वो पहुंचाएं हम तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे, मैं कुछ बातें इसलिए भी रख रही हूँ कि जो देखने वाले उन तक आपकी वजाहत पहुंच जाए, और आपने बहुत अच्छी तरह अपना कंसर्न शो किया है, यानी हमें आपने सेटिस्फाई किया है कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ। एक बस मेरी रिक्वेस्ट है, बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें आप बहुत ज़्यादा अच्छे समझदार और मतलब कंसर्न पर्सन लगते हैं कि जो हम देखते हैं वो हम फॉलो करते हैं। जैसे आपने बताया कि एक फादर आए और उन्होंने निगेटिव रोल की शिकायत की। एक चीज़ मैं कहती हूँ कि हमारे सारे ड्रामों में ना वो जो तलाक वाला सीन बहुत डिटेल और माइन्यूट जुमलों के साथ होता है, प्लीज़ उसको ना दिखाएं, उससे बहुत निगेटिविटी आ रही है, फैमिली लाइफ बहुत बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है। और शायद आपको भी अंदाज़ा होगा जो रिव्यूज़ आते हैं पेपर्स में भी कि जाहिर है डिक्लाइन हो रहा है फैमिली वैल्यूज का भी और फैमिली स्टेबिलिटी का भी। तो इस पर भी थोड़ी सी आप अगर ग्रिप करें तो बहुत अच्छा होगा।
थैंक यू वेरी मच मैडम, आई हैव नोटेड, और मैं ये बिल्कुल फॉरवर्ड भी करूंगा कंसर्न को। लेकिन एक चीज़ मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, आप ये तो मैं नोट किया और मैं इस मीटिंग के बाद ही अपने जो हायर अफसर से ये मामला उनके नोटिस में लाता भी हूँ। मेरी आपसे भी गुजारिश होगी, मैंने पहले भी अर्ज की, आप ये जो ड्रामाज के एंड पे, और मैं इस पे मेरा अपना कंसर्न है और मैं ये रेज भी कर भी रहा हूँ और करूँगा भी, कि ये जो स्पॉन्सरशिप में आप देखिए मुख्तलिफ इदारों के नाम होते हैं, और फिर उन इदारों का आप मिशन और विजन स्टेटमेंट देखें और फिर प्रोग्राम का कंटेंट ड्रामे का देखें, तो आपको समझ आती है कि ये क्या, ये जो आपने इशू उठाया ना तलाक वाला, तो ये खैर ये डिबेट दूसरी तरफ ना चली जाए, इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ इसके ऊपर कि ये कहाँ से इंस्टिगेट हो रहा है। ये वो एजेंडा सेटिंग है जो एक्चुअली हो रही है और जो हमारे सोशल फैब्रिक को डैमेज कर रही है। किसी खास इशू के नाम पे, मैं उसका नाम यहाँ पे अभी नहीं लेना चाहूँगा, फिर डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी। लेकिन मैंने आपका कंसर्न बिल्कुल नोट भी किया और मैं इसको आगे भी फॉरवर्ड करता हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने सारी बातें नोट भी की और बहुत कंसर्न शो किया। मैं समझती हूँ कि अब हमारे दीगर होस्ट अगर सवाल करना चाहें तो वो कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इकराम साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह आपने भी फरमाया अपनी अभी गुफ्तगू में कि जो मीडिया है वो असल में वो खुद से जो दिखाना चाहता है वो दिखाता है, वो लोगों की विल को मद्देनजर नहीं रखता। तो मेरा आपसे सवाल सर ये है कि क्या कोई ऐसा नीड बेस्ड नीड एनालिसिस बेस्ड कोई ऐसा मैकेनिज्म है, ताकि आप ये कभी कोई ऐसी आपने अटेम्प्ट किया, पेमरा ने कोई ऐसी एक्टिविटी की कि पाकिस्तान भर से अवाम से ये राय ली जाए कि वो क्या चाहते हैं, कोई नीड बेस्ड एनालिसिस करने की कोशिश की, सो दैट कि हम अपनी पेमरा अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, मैं सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर द क्वेश्चन। मेरे बिल्कुल ये माइंड से बात गुफ्तगू के दौरान जरा महव हो गई कि हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल्स के ऊपर। हमने एक प्राइवेट एजेंसी से, हमने प्राइवेट पार्टी से एक सर्वे करवाया कंटेंट के हवाले से, कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर, कुछ ड्रामास के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। तो उसका रिजल्ट देख के हम खुद भी हैरान हुए कि 5% पीपल वोटेड के जी हम एग्री करते हैं जो कंटेंट चल रहा है, और 25% सेड के हम एग्री नहीं करते। और फिर उसमें डिफरेंट कंसर्न्स थे फर्दर। तो ये जो बात है कंटेंट के हवाले से जो आपने भी की, तो अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों से फीडबैक लें। जैसे मैंने कहा कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमारी अवेलेबिलिटी है, लोग अपना, और हम तो इवन मैं, मेरी तो अपनी कोशिश ये होती है कि मैं अगर किसी ने कंप्लेंट नहीं भी की और कोई कमेंट डाला हुआ है किसी प्रोग्राम के हवाले से, तो उसको भी हम उठाएं और उसके ऊपर भी हम देखें कि ये शख्स ने अगर कंटेंट के ऊपर बात की है तो हम इसको देखें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या ये ऐसा है कि नहीं है। तो कोशिश तो होती है सर, बट सर्टनली जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ एज के और मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग हमारे इस कंट्री में बसते हैं, बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो हर इलाके के लोगों की सोच किसी कंटेंट के बारे में डिफरेंट, मुख्तलिफ भी होती है और हो भी सकती है। तो एक ओवरऑल बैलेंस रखने की कोशिश जाहिर है की जाती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न आ जाए तो उसको देखा भी जाता है और उसके ऊपर जो मुनासिब एक्शन बन सके वो लिया भी जाता है। हाँ, हमने एक चैनल खुला है पाकिस्तान में, जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन था, वो नीड बेस उन्होंने वो खोला। डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से एक चैनल है जो पाकिस्तान का लैंडस्केप और मुख्तलिफ शहरों की हिस्ट्री और डिटेल्स और पाकिस्तान की जो ट्रैवल गाइड टाइप आप समझ लें या टूरिज्म को करते हैं, ये नीड बेस खोला है उन्होंने। इन्होंने इसके ऊपर एक सर्वे किया मार्केट के अंदर कि ऐसे किसी चैनल की जरूरत है कि नहीं है, और उसके बाद उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस लिया। तो कुछ प्राइवेट कंपनीज, जाहिर है क्योंकि वो बिजनेस वेंचर्स ढूंढ रही होती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही होती हैं, कोई निश ढूंढ रही होती हैं, तो वो भी ये काम कर रही होती हैं, रेगुलेटर भी ये काम कर रहा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, ये थोड़ा आंसर कम है क्योंकि मीडिया की तादाद जितनी ज़्यादा है इसकी ज़रूरत और ज़्यादा है सर। जी जी इकराम साहब, माशाल्लाह आपने बड़े खूबसूरती के साथ हमारे सवालात के जवाब भी दिए, और हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे सेंसिबल किस्म के अफसर जो है हमारे पाकिस्तान के दायरे में मौजूद हैं, जो फिक्र भी रखते हैं। और हम्बल्ड सर, बड़ी हम्बल्ड। बड़ी खुशी की बात है सर। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त जितने भी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चैनल्स हैं,
तो उसमें सबसे बहुत बड़ा एक जो कमी नजर आ रही है वो हमारा अपना जो कल्चर है पाकिस्तान का, वो हमारी अपना जो एक इस्लामी तशख़्ख़ुस है, वो ख़ास तौर पर जो चाहे वो कोई भी ड्रामा हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो जो हमारा अपना एक पाकिस्तानी कल्चर है वो नज़र नहीं आता, वो उसका बड़ा शदीद फुकदान नज़र आता है। तो अगर एज अ रेगुलेटरी बॉडी, और ख़ास तौर पे जो आपके माशाल्लाह इतने अच्छे जो थॉट्स हैं, तो अगर ये कर सकें आप किसी तरह, ताकि कि हमारा जो तशख़्ख़ुस है ना वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए हर प्रोग्राम में और हर उसमें। तो इसके हवाले से अगर आप कुछ कर सके तो सर बड़ी आपकी वो खास काम सर होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट अभी हाशमी साहब ने शुरू में इंट्रो में बात की कि इकबाल के ऊपर उन्होंने खुद ही के ऊपर एक प्रोग्राम किया, तो मैं ये एक इंसिडेंट ही आपसे शेयर करने लगा हूँ। अभी ये 9 नवंबर गुजरा था, चंद हफ्ते पहले अल्लामा इकबाल का बर्थडे था। तो एक बहुत ही बड़े चैनल ने अपने मॉर्निंग शो में इकबाल की एक नज़म सुनाई। आप यकीन कीजिए वो नज़म इकबाल की थी लेकिन अल्लामा इकबाल की नहीं थी, और वो नेशनल चैनल पे चली। तो खैर वो तो जब और चल गई, और वो उसके बाद फिर उसका नोटिस भी, वो चीज़ें भी हुई सारी, और उन्हें माजरत भी उन्हें की उन्होंने, लेकिन वो एक दफ़ा तो चल गई। और ये हालत हो चुकी है कि उनकी रिसर्च इतनी सी थी कि वो ये नहीं चेक कर सके कि ये नज़म अलामा इकबाल की है भी कि नहीं। उसके मक्ता में इकबाल का नाम था, उन्होंने इकबाल, अलामा इकबाल कह के वो पढ़ दी कि ये अलामा इकबाल की है, और ये नेशनल टीवी चैनल एक है उसके मॉर्निंग शो में ये चली। तो उस पे फिर खैर जो भी फिर प्रोसीजर था वो हुआ। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि कल्चर और फिर हमारी जो अपनी ही हिस्ट्री है वो, और हमारे जो एस्पेरेंट्स हैं जो मीडिया पे आके बैठते भी हैं, वो थोड़ा सा, मैं ये भी गुजारिश करूंगा अगर असातिज़ा किराम बैठे हैं तो वो भी बच्चों को ये ज़रूर कहें कि जब वो कहीं जाके बैठें, माइक पकड़ें, टीवी पे बैठें, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका जो कंटेंट है वो हज़ारों लाखों लोगों तक जाता है, तो वो थोड़ी रिसर्च कर लिया करें उसके ऊपर। भारत सर, ये भी पॉइंट मैंने नोट जरूर आपका किया, और मैं किसी फोरम पर जरूर इसको रखूंगा। वक्तन फवक्तन हम ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े कम तादाद में हम मुख्तलिफ एडवाइजरीज चैनल्स को हमने ज़रूर प्रीवियसली इशू की हैं कि ख्याल रखा जाए। लेकिन मज़ीद जैसे आपने फरमाया इस पर कुछ ज़रूर वो करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस मौके पे ख़ास तौर पे ये मेरी ख्वाहिश है, और यकीनन हम सब की ख्वाहिश होगी, हमारे हाशमी साहब की भी ख्वाहिश यही है कि हम एक आपस में कंटिन्यूसली अब हम राब्ते में रहें, और इस तरह के प्रोग्राम वगैरह दोबारा भी हम मैनेज करें जिसमें ख़ास तौर पे आपको मदऊ किया जाए। और ये मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप हम आपस में राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मज़ीद जो है कोई आपस में शेयरिंग ऑफ थॉट्स भी करेंगे, और कोई अपने कंट्री को और अपने इदारों को कोई बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे। सर डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर हाशमी साहब के पास मौजूद है, और मैं बिल्कुल, हाशमी साहब को परमिशन है कि वो जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो ऑनरेबल मेंबरान हैं, उनके साथ वो शेयर करें। और मेरा ऑफिस भी लाहौर में ही है, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग लाहौर से शरीक हैं। तो मैं सर हर वक्त हाजिर हूँ, आप जस्ट अ कॉल अवे, आप मुझे एक टेक्स्ट ड्रॉप कीजिए अपने नाम से, और कोई सेशन रखना चाहें, कोई हम इस पे डिबेट करना चाहें, लर्निंग भी होती है, और हो सकता है हम कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएं सोसाइटी के लिए इसके साथ। तो मुझे बहुत खुशी होगी सर कंट्रीब्यूट करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम तो ये चाहेंगे कि हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के साथ आपका कोई इंटरेक्शन करवाएं, कोई उनको आप एड्रेस करें, तो इंशाल्लाह इट इट विल आल्सो बी मैनेज्ड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा ताल्लुक Thank you, Ji. Yeah, Dr. Thank Tariq, you. are you Yes, there? thank you. Thank you very much for the discussion and good questions. डॉक्टर आबदा एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी दरमियान में, तो दिस इज द राइट जी टाइम डॉक्टर जी, आबदा, इफ यू आर अस्सलाम देयर। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। क्वेश्चन तो मेरा उसका आंसर आ गया है, लेकिन मैं असल में ट्रैवलिंग में थी, हो सकता है मैंने पूरी बात ना सुनी हो। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ड्रामाज आते हैं, अव्वल तो सोशल मीडिया का तो मेरा ख्याल है पेमरा से लिंक नहीं है, वो तो पीटीए हैंडल करता है। लेकिन जो चैनल्स पे हमारे ड्रामाज आते हैं, तो क्या उसको उसका पहले कोई असेसमेंट होता है? नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब पब्लिक रिएक्शन आता है तो फिर वो बंद हो जाते हैं या उनको कट शॉर्ट कर दिया जाता है, तो पहले कोई
या बहुत अच्छा क्वेश्चन पेश किया है डॉक्टर आपदा, यानी कि आज बाद में जो कमेंट करते रहें या कंट्रोल करते रहें या कंप्लाइंस देखते होने रहें, का कोई मैकेनिज्म है कि नहीं सर? पहले जो है ये वो हो सकता उसको है मैंने ना चेक करने सुना। का कोई प्रोसीजर है कि वो रिलीज होने से पहले चेक हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर आपदा ने पेश किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबदा साहिबा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लॉ या कोड ऑफ कंडक्ट थैंक यू। एक ब्रॉडर गाइडलाइंस बताता है कि कंटेंट में आप डूज एंड डोंट्स क्या हैं। ज्यादातर डोंट्स ही हैं जाहिर है, और उसके अलावा बाकी सारे डूज में आ जाते हैं। तो उसके बाद चैनल्स के पास एक, अच्छा मैं ये क्लियर कर दूं कि पेमरा जो है वो एक सेंसरशिप बॉडी नहीं है। जिस तरह फिल्म बोर्ड होता था, वो पहले फिल्म का कंटेंट देख के क्लियर करता था तो वो फिल्म सिनेमा पे लगती थी। तो पेमरा सेंसरशिप बॉडी नहीं है, पेमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 3 मैकेनिज्म्स ब्रॉडकास्टर के पास, चैनल के पास अवेलेबल है। नंबर 1, कानून के मुताबिक उनको एक अपनी इन हाउस मॉनिटरिंग कमेटी बनानी है, जो कि जिसमें लॉ के लोग होंगे, जिसमें मीडिया के लोग होंगे, जिसमें एकेडमिया के लोग होंगे, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग होंगे, सोशल सोसाइटी के लोग होंगे, जो सब ने ऑलमोस्ट बना के नोटिफाई की हुई हैं और पेमरा को इन्फॉर्म किया हुआ है। वी बिलीव कि जब कोई कंटेंट वो चैनल पे आता है तो पहले वो मॉनिटरिंग कमेटी देख के क्लियर करती है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक है या नहीं है। दूसरे नंबर पे चैनल के अपने पास जो उनका अपना एक मैकेनिज्म है कंटेंट मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग का, वो अवेलेबल होता है। और फिर लाइव कंटेंट के लिए, जैसे मैंने बताया, जो कि मोस्टली न्यूज़ मीडिया से रिलेट करता है, वो उनके पास एक टाइम डिले मैकेनिज्म होता है। आपने अक्सर देखा होगा, एक टीवी चैनल पे एक फिक्रा बोला जा रहा है और दूसरे टीवी चैनल पे जब आप स्विच करते हैं तो वहां वो अभी बोला नहीं गया होता, तीसरे पे सर्च करते हैं तो वो बोला जा चुका होता है। तो ये वो टाइम डिले मैकेनिज्म है जो उन्होंने अप्लाई कर रखा होता है अपने कंट्रोल को, उसको मॉनिटरिंग को और फिल्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए। तो ये मैकेनिज्म चैनल्स के पास अवेलेबल हैं। अब जब पेमरा का रोल फिर इसमें स्टार्ट तब होता है जब कोई कंटेंट रिले हुआ और उसके ऊपर किसी को ग्रीवेंस आ गया। कंटेंट रिले होने से पहले गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसको इतने कंटेंट को चलने से पहले मॉनिटर करना, देखना और फिर उसको क्लियर करना, ये ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं। और ये भी हो सकता है कि हम किसी कंटेंट को क्लियर कर दें, हम कहें ये ठीक है, लेकिन किसी शख्स को उस पर इतराज हो। तो इसलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेशन की एसेंस यही है कि आप गाइडलाइंस दे दें और उन पर फिर अमल दरामद कराने की कोशिश करें। तो ये एक ब्रॉडर सा इसमें फ्रेमवर्क है जो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स वेरी मच डॉक्टर अब्दा। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? All right, I think we should move towards the conclusion. और फिरासत भाई, आपका कोई और क्वेश्चन है? जी सर, I think everything is good and we learned very much. A very valuable discussion is here from our panelists and our special guest, Mr. Mohammad Ikram Barkat from PEMRA, Punjab Operations, and our host, Dr. Tariq Saeed. Thank you very much for joining and conducting this program, and our panelists. Just we'll invite our session chair, Professor Dr. Iftikhar Ahmed, for the concluding remarks, please. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am grateful for all of you being participations of the session. Actually, we had a very good discussion which highlighted crucial role of Electronic Media Regulatory Authority in ensuring that the media outlets operate within established guidelines and standards. Obviously, there are challenges posed by the emerging technologies and the importance of adaptability in regulation as well as opportunities for innovation and growth. Raising public awareness about media literacy and the role of regulatory authority is key area for our future focus. In this regard, the need of ongoing reviews and update of regulatory frameworks to keep pace with the technological advancements is to be emphasized. The role of Electronic Media Regulatory Authority is multifaceted
and critical in today's digital landscape. By fostering collaborative environment, encouraging public awareness, and ensuring adoptable regulations, we can work toward a future where electronic media can serve public interest while respecting individual freedom. Thank you very much, Mr. Ikram Barkat, the Director General of the PEMRA, panelists, host, and Dr. Hashmi for being here and highlighting this very critical issue and giving us insightful and contribution and participation for your time. Thank you so much. Thank you, everybody. Very last moment, actually, we got in this acceptance of this webinar from our special guest. So, in the last moment only, we invited you all on this program. So, it was very valuable discussion, excellent guidelines we have given, and we're going to keep in touch in future also, inshallah ta'ala, with all the bodies to get involved. And there is very good that there should be a community group or organization or to help and discuss their issues or suggestions to the body. So this is a very good suggestion. We would like to be part of that organization or the group or whatever the procedures are there. We're going to follow to get involved in this discussion in the future also, and we'll invite also again a request again to Dr. Ikram in future also other topics also special topics we'll bring up here. Thank you very much, everybody. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you very much for providing the opportunity. बहुत Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया everybody. Thank you very much. Dr. Aziza, Dr. Maqbool, Dr. Ikram, and Dr. Tariq Saeed, and our session chair, Professor Dr. Iftikhar Ahmed. Thank you very much and highly appreciated, Prasad bhai. You know, आपके sustained efforts हैं to educate us in different aspects. Or this year, HIBA has started a new trend and this webinar trend, and I think we should continue with this one. Monthly एक हो जाए तो बहुत अच्छा है. Yes, sir. Thank you very much. We have just arranged the series of the seminar especially, and the name what we have given is Let's Talk HIBA. So this is the program title we have given for the 2025 webinar series. Inshallah, our targeted at least minimum, but actually this webinar came especially actually on urgent basis. Our last webinar was very, very good on Iqbal's Khudi on January 4, and that to Dr. Amina and other panelists were there. And we have the recording of that one, so you can go through the recording also, and for this also we're going to provide the recording. And thank you, and you can give your suggestion for the improvement. We are just learning from each other, and our valuable technical committee members are helping us since long time, since 2021, in establishing this platform of the research scholars around the world. Thank you very much. Bye. Thank you, Ji. I think with this, the program comes to